Jimmy. Aja Amerika. ये मत दिखाओ कि मैं क्या लिख रही हूँ. See an angel coming out, and this is like a cycle of life. Good morning everyone. आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा है, then I'm in Georgia, and आज मेरा यहाँ पर है 3rd और 4th night. मुझे याद नहीं है. मैं अभी हूँ Tbilisi, which is the capital of Georgia. Georgia is the name of a country. Tbilisi is the capital. और मैं यहाँ एक होटल में रुक रही हूँ जिसका नाम है वाइन पैलेस होटल. तो वन थिंग अबाउट द होटल, आकांक्षा माय फ्रेंड जो हम दोनों अभी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, हमने ये होटल बुक किया 1 रूम ट्विन रूम. बट व्हेन वी चेक्ड इन, रिसेप्शनिस्ट ने बोला दैट हमारे पास अभी बहुत रूम्स एम्प्टी है, कमरा बाकी है, तो वी विल गिव बोथ ऑफ यू सेपरेट रूम्स. वी आर सो हैप्पी. और उन्हें बोला कि इफ़ यू बुक लाइक 2 nights, 3rd नाइट फ्री में मिल जाएगा. तो आज हमारा 2nd नाइट है यहाँ पर, एंड कल होगा 3rd नाइट. पे करना पड़ेगा जस्ट फॉर 2 night, ओनली फॉर 1 रूम, लेकिन हमें 2 रूम मिल रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं. तो मैं आप लोगों को जल्दी से एक रूम टूर देती हूँ बिफोर वी गो आउट एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग Tbilisi. अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है Tbilisi, सो वी आर वेरी एक्साइटेड. हम जब यहाँ पर पहुँचे जॉर्जिया में, वी डायरेक्टली वेंट टू कास्पेगी, जो वो माउंटेनस रीजन जो है. बट Tbilisi हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है. बट द मेन एयरपोर्ट इज़ हियर इन Tbilisi. एक दूसरा प्लेस है नॉन एज बातुमी, विच इज़ नियर टू द सी. वहाँ पर भी है एक एयरपोर्ट, बट वी केम हियर टू Tbilisi. तो मैं आप लोग को जल्दी से रूम टू देती हूँ बिफोर वी गो आउट. यहाँ पर मेरा कपड़े है, प्लीज डोंट माइंड. और ये है बाथरूम. एंड फिर यहाँ पर है रूम विच इज़ वेरी बिग. मेरा रूम बहुत बड़ा है. एंड यहाँ बाहर आप देख सकते हो व्यू फ्रॉम देयर इज अ टेबल, chair, and here is the mirror. So for this room we are paying like 200 dirham per night. 200 dirham in the sense होगा around 4,000 rupees per person, like 2,000. तो हम बस 2 night के लिए पे कर रहे हैं यहाँ पर. So let's say 4,000 per person for 3 night and separate room. So I think it's a good deal. हमें अच्छा डील मिला इसमें. And one thing I wanted to tell you, जब आप लोग यहाँ जॉर्जिया में आओगे, डाउनलोड दिस ऐप नॉन एज Yandex जो कार के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए. इट इज़ मच मोर चीपर एंड अफोर्डेबल. अगर आप लोग रास्ते में कार रोक लोगे टैक्सी, दे आर गोइंग टू चार्ज यू सो मच मोर. बट इस ऐप में बहुत कम है. यहाँ से मेन टाउन में जाने के लिए विच इज़ लाइक 15 minutes लगेगा, 5 लारी यहाँ की करेंसी. बट इफ़ यू बुक द टैक्सी ऑन द वे, easily 15 to 20 lari they are going to charge you. So it is better that you download this app, ताकि affordable भी होगा, सस्ता भी होगा, and you don't have to tell them यहाँ पे आओ, यहाँ पे जाएंगे. So it is so much convenient. So I would highly recommend you to do that. और ये है लॉबी ये होटल का जहाँ हम अभी रुक रहे हैं. And let me introduce you to the owner, Georgi. And this hotel name is Wine Palace Hotel, and it has been like 3 years since you have opened this up, right? Yes. Yeah. 3 years. Yeah. Sulfur. Okay. Sophie here. Sophie. Yeah. Sophie is here, and there is Georgi here, and he is the owner of this place. And this place is very nice. And we also went to the cellar, the wine cellar, which is in the ground floor, right? You could come. No. Right now? Yes. Yeah, we can. So Akansha and we went on the first day to the wine cellar. And अगर आप यहाँ पर रुकोगे, the wine cellar, the wine is यहाँ पर आप लोगों को पीने को मिल जाएगा फ्री में. Sophie is taking us to the wine cellar now. Yes, please wait some. Yeah. तो ये है होटल का wine cellar जो यहाँ पर आपको दिख रहा है. And this, like for the hotel guests, it is free, right? Yeah. For the wine tasting. Wine, yes. It's Yeah, for yeah. all guests. It's a homemade. This one. This is the homemade one from. Wait, I heard this is from which place? Takheti. Yeah. And this is, I think, from the Stalin's village, right? Yes. ये try किया था. I have tried this last time once. Yeah, Yeah, dry wine. I tried this dry wine. देख लीजिए आप कितना wine है यहाँ पर. And this is also wine, right? Yes. So huge, very big. And what about this? This is the white dry wine. This is also made it here. Medium. Ah, okay. Georgian, yeah. और ये जो आप यहाँ पर आपको दिख रहा है, this is for the vodka. Vodka shrine. Yeah, for making vodka.
Okay, bye bye. Yeah, you too. Thank you. Guys, ये Tbilisi का old town पीछे, and we are just walking around here. होटल से यहाँ तक हमें लगा 4 लारी, and जो मैंने ऐप आपको बोला था Yandex, so वहीं से बुक किया था, and it cost us 4 lari to come here. And our plan is to go to. Are we going to see the sulfuric bath? We'll see a sulfuric bath, जो यहाँ का एक बहुत ही famous bath type होता है, where you go and sit in a warm room. और यहाँ पर you can see like a cable car. और ये नहीं पता ये क्या है. What is this? Hot air balloon. And ये cable car जाएगा वहाँ ऊपर एक like a church type of कुछ है उधर. And here is a monastery. मेरा फ्यूचर कार मिल गया. How much? 10 lari. 10 lari. Вот это? Нет, вот это. Эти 10 лари, эти 5 лари. Это грузинская вся. Вы черешня? Да. Точно. इनका स्वीट्स. And guys, ये है यहाँ का स्वीट्स, Georgian sweet. I think these are all nuts जो coated है. This is very popular here. मैंने टिप वो कास्बेगी में भी देखा था ऐसा वाला स्वीट्स, और यहाँ पर भी अभी देख रही हूँ. ट्राई नहीं किया है, शायद करेंगे हम बाद में ट्राई. अभी हम दोनों ने पोमोग्रेनेट जूस ऑर्डर किया है, मीडियम. हाउ मच इज़ इट फॉर द पोमोग्रेनेट जूस? 15 middle, big 10. No, 15 middle. 15 is middle. Okay. 15 lari for the medium size. Try. It's amazing. What's that? Cherry. Georgian cherry. 15 lari. 15. ट्राई कर रही हूँ अभी. You can see it outside. But with your बहुत ही फ्रेश, बहुत ही टेस्टी है. ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. हम यहाँ पर जूस पीने के लिए तो ऑब्वियसली नहीं आया था, बट इट्स सो गुड टू ऑलवेज टेस्ट. पता है जब भी आप नए प्लेस में जाते हो तो वहाँ पर क्या मिलता है. एंड ये 15 लारी का था, सो नॉट बैड. Someone to save me, no, and don't come running to blame करते me. यहाँ पर पहुँच गए हैं सल्फर बाथ हाउस में. और ये जो आपको यहाँ पीछे दिख रहा है, दिस आर ऑल द बाथ हाउस, जिसका ऐसा डोम शेप बना हुआ है. एंड दिस वाज बिल्ट ड्यूरिंग द 4th century. जब 4th century में एक किंग था, एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द हॉट स्प्रिंग. तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि लेट मी जस्ट मेक इट हियर इन तिब्लिसी. एंड आई हर्ड दैट द नेम जो तिब्लिसी है वो भी रिलेटेड टू हॉट वाटर या कुछ हॉट स्प्रिंग, कुछ ऐसा नाम का है. एंड इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग टू नो. और यहाँ पर जो सल्फर बाथ जो है, ये तो है ओल्ड वन एंड द ऑथेंटिक वन, बट दे हैव आल्सो स्टार्टेड मेकिंग द न्यू वन. एंड आप वहाँ पर जाके यू कैन पे लाइक 50 लारी, 100 लारी, एंड यू कैन टेक अ बाथ. एंड इट कैन ऑल्सो बी लाइक इन अ हॉट वाटर, और कोल्ड बाथ भी आप ले सकते हो जैसे आपकी मर्जी है. आई एम नॉट श्योर इफ़ यू विल टेक इट और नॉट. इट्स ऑल्सो नॉन एज थर्मल स्पा. और ये है दूसरा वाला जो थर्मल स्पा सल्फर बाथ. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over. Photo or video Okay. and send your boyfriend. What if I write here my boyfriend will love me forever? Yeah, of course. Oh, so I will never break up with my boyfriend? No. No? No. If I don't have, then? You don't have. You don't. If I don't have, I don't have to write. Okay. You can take home. अगर आप लोगों के पास बॉयफ्रेंड है तो आप यहाँ पर आके लगा सकते हो. बहुत लोगों ने लगाया है. Bridge. This is what bridge is this? This name is Rainbow Bridge. मैं सोच रही कि लगा लो एक ही यहाँ पर, क्या पता गुड लक हो जाए. I've got the red one and this is for 20 lari. पता नहीं यहाँ लिखने से क्या होगा, but I'm just going to write it for. ये मत दिखाओ कि मैं क्या लिख रही हूँ.
Have Instagram? Yeah, I have. You can search this bridge, Rainbow Bridge Tbilisi, and if you have, you can follow and tag your photos. Oh, okay. Where I can show this? Email. I will. Anywhere. Where you have? Anywhere. Do it, don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do. The key, I'm going to put it like a necklace. Oh. ना डाल दिया है उधर. And this I'll put it as a locket. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said you love for me. हम किधर जा रहे हैं? Like we were just walking around. हम यहाँ पहुँच गए एक ब्रिज में और अभी रिसर्च किया. ये ब्रिज का नाम है The Bridge of Peace and it was built in 2010. And ये अभी नया है काफ़ी. This is one of the new attraction and also this is the 13th most unique bridge in the entire world. And यहाँ पर साइड में है राइट पार्क. ये है एक पार्क और ये ब्रिज के उस तरफ है ओल्ड टाउन जो तिब्लिसी के एकदम से ओल्ड टाउन. एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम देयर. Hold up just a minute, been looking for some help just to find myself. Yeah, been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all. Very glad to see you in my country. Welcome anytime you want, of course, and I wish only best. Thank you so much. Jimmy. Ajari Mirita. I don't remember the. Yeah, you know, I little bit I remember the word. Yeah, you know it well. You still remember it. Madloba. Madlova, yes, this is a thank you, but if more correctly translate, it means bless you from God. Ah, bless you If from more God. correctly translate, you know. Gamar Joba, it means a hello. Hello, yeah, but Gamar if Joba. more correctly translate, it means be always winner. That's interesting. Yeah. How it will be for Indian? Welcome. You're welcome. Namaste. Repeat, please. Namaste. 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 You say namaste for everything. Namaste. Oh, I try to remember. Namaste. So ये जो पीछे अभी आप देख रहे हो this known as the clock tower here in Tbilisi and ये old Tbilisi के अंदर पे है area. After you walk from the beach of peace तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे if you come straight. And ये जो tower है ये unique structure है but twice in a day यहाँ आपको ऊपर में you'll see an angel coming out and this is like a cycle of life जो होता है and this is like actually it's like a theater. यहाँ पर show होता है every twice in a day. तो अभी हम लोग it's afternoon time so we can't see it but अगर आप आओगे 7 o'clock in the evening you will see the show here and it will be crowded. अभी भी आप देख सकते हो there are people around but not so much. फोटो लेने के लिए आए हैं लोग and यहाँ के आसपास में it's like just a small town some shops है और यहाँ के अच्छा things क्या है I mean अच्छे things क्या है like the houses are all in the old style maybe इसलिए old Tbilisi बोलते हैं यहाँ पर and look at the यहाँ का जो पाथ है pathway and यहाँ पर देखते हैं क्या है लिखा हुआ है. ये भी खुलता होगा 7 o'clock में. It's all been a waste of time. Waste my time. तो गाइस वापस आ गए हैं हम तिब्लिसी का टूर करके एंड मैं वीडियो आज यहीं पर ख़त्म करने वाली हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.